we are doing a casual chit chat as of now, so no need मतलब to इतने फ्लो में बोल दिया मैंने, पोएट्री भी लिख रही हूँ, ये भी कर रही हूँ। ये सब होना चाहिए था लाइव। कोई बात नहीं है ऐश्वर्या, नाउ इट विल गो लाइव। अब डर लग रहा है सर लाइव होंगे। अब फिर से बोल देना ऐश्वर्या। This is a very good अब रुचिरा opportunity. This is a very good opportunity, you know. अब पांच ही रुचिरा लोग रूम करेगी। पे, you can talk. It will be great. Like मेरे को लग रहा है लाइटिंग ठीक होनी चाहिए। लेट मी जस्ट कम बैक। या YouTube नहीं में अभी लिंक भेज रहा हूँ, देखिएगा लाइव हुआ कि नहीं। फेसबुक पे या कहाँ पे? यूट्यूब पे? YouTube पे कर रहे हैं इसको। नीश मार्केटर्स में। या अभी एक लिंक भेजा हूँ, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में। इज इट टेकिंग यू देयर? ये कैसा दिखा रहा है? सॉरी, इट्स लाइक Yeah, it's live stream. I think I pasted a wrong link in the group. ये No, कैसा दिखा रहा है? Sorry. it's right. Live. It's like, Yeah, it's live stream. I think I pasted a wrong link in the group. ये कैसा दिखा रहा है? Sorry. It's right. Live. It's like, Yeah, it's live stream. So happy Women's Day to all. जिसने भी यहाँ पे ज्वाइन किया है। और मेरा नाम है रुचिरा पाटिल और मैं हूँ एक डिजिटल मार्केटर और मैं हूँ इंदौर से। और मैं गूगल एड्स और फेसबुक एड्स रन करती हूँ बिजनेस और ब्रांड्स के लिए। और मैं साथ ही कंसल्टेशन भी देती हूँ सारे बिजनेस ओनर्स को। और जिसका भी बिजनेस है या ब्रांड है जिनको बिजनेस की स्ट्रेटजीज बनानी है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो मैं कंसल्टेशन भी देती हूँ। और 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ। मेरी अपनी टीम है, वर्चुअल टीम भी है, इंदौर में भी है और हम लोग साथ में काम करते हैं। और अभी मैं डॉक्टर्स के लिए मार्केटिंग कर रही हूँ, हॉस्पिटल के लिए और क्लिनिक के लिए। तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। और मैं इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव रहती हूँ, मैं लाइव भी करती रहती हूँ, तो इसीलिए मुझे बहुत आदत है इंटरेक्ट करने की लोगों से। Ashwarya, are you able to see that YouTube link? हाँ, दिख रही है। Can any one of you share that link here chat में? Yeah, I've shared. I think this is taking there. Yeah, awesome. So let's get started with this. मैंने तो स्टार्ट कर दिया था, अब ऐश्वर्या। Okay, hi everyone. First of all, very happy Women's Day and thanks to Govardhan ji who has invited all of us here in this live session. And introducing me, I am a content writer and marketer who works for brands and clients and help them creating strategies and content for their website or whatever they want. And apart from that, I am into like digital marketing and basically मेरा main focus content पे ही रहता है. And other than content, I do a lot of activities like participating in anthologies, poetries, and working on my Instagram also for my personal brand. And other than that, I am a co-host of Women in Marketing series in Niche Marketers. And the agenda behind that is to take interviews of all the women marketers who are doing good in the industry. And I keep on doing all this stuff because when I interact to people, I get good ideas and I get to know more about how can I improve my content and even how can I improve myself. So this is it, and like over to Mansi.
Sure. I think Rushida has shared her stuff, and yeah, Ashwarya has been working with me to host the Women in Marketing show, which we have recently started that. So there we're trying to bring women marketers and talk about their journey, not just about the technicalities. We talk about their journey, their life, how did they become marketers and all. So yeah, Mansi, would like to hear from you about your short intro. Then we'll go to the next part of this thing. Thank you, Govardhan. Happy Women's Day to all of you and everybody else who's watching. My name is Mansi Rastogi, and I have been in this industry for about like 20 years now. So I'm an oldie. I have been around for a while, and I run an agency, a B2B branding and marketing agency called Rebrand Advisory. I'm a serial entrepreneur, so I do have a couple of other agencies that I'm running parallelly as well. There's one more called Noteworthy Media, which is fairly new, and that is going to be focusing on LinkedIn content marketing, really. Right. So I'll connect What's with the name you. of it? Noteworthy Media. Okay, interesting. Yeah, we haven't gone live yet, but it's like a sneak peek into what we are going to Yeah, get. good that we are knowing it beforehand. Yeah. Beforehand, yeah. So my forte is actually branding, and I am a certified persuasion strategist. So basically, what I do is whenever we are doing any kind of content marketing or anything like that, we focus on persuasive marketing. So we are looking at positioning right. We are looking at people who are wanting to position themselves and be persuasive when they are trying to get more than likes and stuff. We are trying to get more conversations going. That's what we are looking for, right? So that's a little bit about me. Most of the businesses that I work with are larger businesses. I very rarely work with small businesses, but it has been fun so far, like a fun journey so far. And I have known Govardhan for a while now, so that has been Awesome, fun actually, too. Mansi. I resonate a lot with what you do, and really, like, there's a lot to learn from Mansi as a seasoned marketer. And persuasion, psychology, all go hand in hand when we are doing marketing. Most of the guys actually mistake marketing for dashboards and tools, but we need to understand human psychology is the core of marketing. That's where you're able to play because an ad goes viral not because of the dashboards. It goes viral because of the way you understand exactly you got the customer psych and you were able to just able to tap into it. So that's what I like what Mansi is doing there. So it's good that we are seeing different people in this frame. Ashwarya is into content and Ruchira is into paid media as well as Instagram and all. So Mansi is into branding and also there's a lot of huge possibilities where there are synergies to actually work together also. So Sai Kirti, I would like to ask you to introduce yourself. Yeah, hello, sir. How are you? I'm good. Please go ahead. Okay. Happy Women's Day, everyone. Myself, I'm Kirti. To be honest, I'm a beginner when I compare with the other people who are present over here right now. I'm into social media marketing and Instagram ads as of now, and currently I'm working with 2 clients. And the thing is, I got one client who came through niche marketers and through Govardhan sir through one of the live sessions itself. And she got retired for more than 4 months now, and still we are working together. So thank you for that. And when it comes for my profile, currently I'm a beginner in social media marketing, and I'm a Carnatic music tutor as well, and I have my own academy called Veda Samruddhi, where I'm trying to connect all the kids to our roots, which we are missing right now in this hustle bustle world of technology. So that is my academy, and I'm working on it. In order to promote my academy and to get leads, I learned this, but luckily now I'm freelancing in this field as well. So this is about myself. That's awesome. Actually, now we have 4 people, so you know introduction of each other. So if someone wants to ask a question to someone else, you can pick because I think Mansi is a senior here. Anyone can shoot questions to Mansi because definitely you can pick her brain on like being a woman and all. It's not like I'm not like talk about gender bias or something, but again you can pick your thoughts or anyone is free to ask anyone a specific question.
If you don't have a question, yeah, Ruchira, yes, please. हाय मानसी, मुझे ये पूछना है कि काफी टाइम जो है ये होता है प्रॉब्लम कि आप मैनेज नहीं कर पाते हो बहुत सारे, जैसे आपने बताया कि आप जो एजेंसी रन कर रहे हो 2-3, मैं खुद अभी टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ। कभी मुझे क्लाइंट्स को भी काम देना होता है, टीम को भी, और इंटर्न्स जो किए हुए हैं वो कंसल्टेशन भी करती हूँ, तो इतनी सारी चीजें एक साथ जो मैनेज है, मैं ठीक है अभी सीख गई हूँ थोड़ा थोड़ा, बट आप इतने सालों से कैसे मैनेज कर रहे हो? Okay, so Ruchira, it is still tough. It's not easy. But what I did was, and I think I learned this very late in my life. I should have learned this sooner. So if anybody is going to start an agency of their own, they should learn this. You start hiring people who will replace you in certain jobs. And you have to give, so you have a certain level of quality that you feel wo quality dip hogi when there is somebody else who's going to join in, क्योंकि आपकी quality जो रहेगी उसकी रहेगी वो maybe not at par. Maybe sometimes you can't even hire the people that you want to because they are so expensive, good people, because they're so expensive, right? So what I did was that first, okay, I want to do two things here, Govindar. I'm going to talk about this about for Women's Day as well. Working women who have taken a break from their careers, mothers who have taken a break from their careers, the kids have grown up. Now they're wanting to go back to work, but they can't because of certain restrictions. They are the best employees you will ever have, as long as you give them flexibility and as long as you give them freedom to work. They work very hard. They work sometimes even odd hours, as long they're very responsible people because they're used to responsibility. And I think it's a very untapped market, that people who want to get back, women who want to get back into working, right, and who want to like refresh their stuff when you don't hire them. So what I did was, someone who was a content writer, I tried her out. So we did a little bit of what you call business dating, and I started to contract her for work. I started to like her work. I started to like her approach. So I asked her, would she join as a senior person in my organization? Because I wanted to ensure that the person who's coming on board has the same values as me, has the same ethics as me, will retain the same culture as me. So she is now my second in command. This is after many years. Like, I started working with her somewhere around 2016, maybe before that. And now she's the part of my team. She handles one side of my team. Like tomorrow, if I want to go on vacation, and I will say that, okay, I am switched off, don't even call me, she'll handle everything. I know it. I've done it. Like, I go on these retreats. Before the pandemics, I used to go on these retreats where my phone was off. I was off the grid. Nobody could contact me. She would handle everything for me. So she is like the strong arm for me. And she, like I said, she's a working mother who had to quit her job because of her kids. And she works sometimes, and she told me she can't do full time initially. And her kids have now grown, but she told me she couldn't do full time. I said, it doesn't matter. Whatever time you have available, you tell me what you can do. So she would work with me. So I'm saying it's a very untapped market. So if you're an agency owner, especially if you're whether you're a man or a woman, it doesn't matter, right? Think about the working mothers who want to get back. Jinke bache have become like 10 years and above, because they don't require like little care, but also hire for someone who can take over from you. And it doesn't matter whether their quality is not the same as yours, because there will be a dip, but they will learn to come at par with you. And that's the only way I can actually run one more agency if I want to. And that's what I'm looking at. So as I'm making my mistakes, for my next agency, I'm doing exactly that. I'm looking for people beforehand, before I actually start. Now I can afford to actually pay a little bit more. So that's good. But yeah, that's a good question though. Good question. Thank you for answering, Mansi. It's actually toughest right now. Many people are facing the same issue. When people come to me a lot of times now asking for hiring people, I tell them that it's very easy to connect you to a freelancer project. I can do it very fast. But if you say you want to hire a people, I'll charge you, because it's going to take a lot of time of mine. It's not easy finding good talent. And like Mansi, I think whatever Mansi has given, like a 5 minute, it's a very big hack actually, I can tell. Because after going through so much pain, she would have discovered this. And one more thing, what I liked is because those people now, those ladies,
they have that maturity also. Not like, I'm not saying young people are not mature, but again, like some things come through experience. Some things we can never, though you might be genius, you might be intelligent, but some things you only learn through experience, especially client handling. क्या होता है ना, as an agency or as an employee, you screw up things, but you know how to cover it up when you're mature enough. Now you know that, and how you do that, you know how to talk to the client, the politeness, everything that matters a lot. And in 20s, we generally don't want to bow to anyone. We don't like it. We say, and nowadays it has become a culture like now you want to call everyone with the first name only. I'm not saying it's wrong. Sometimes that kind of what we say, that you learn through experience few things. Few things, obviously, the skill, everything matters. So I think Ruchira's question is a very interesting one, and many people are facing the same problem. And I also have my insight is to that is maybe you should also try to find out some good people to collaborate with. It's not always easy to find, especially marketing, digital marketing. Now, you can't find talent so easily. Yeah, It's so very, that's another thing. I agree with Govardhan. So for my next agency, I do have a co-founder, a partner, who is going to help in that sense. Like he has a different build. He brings out a different skill set. I bring a different skill set, and the two of us together are quite a force to work with. yeah. Right? Yeah. So yeah. So any other questions coming up? मेरे पास I want to सारे ask. हाँ Aishwarya? सो मेरे को सबसे ही पूछना है, मतलब कोई भी बोल सकता है इसका आंसर, सभी देना है इनफैक्ट। मतलब अभी तो आई एम रियली यंग, बट मेरे को वर्कलोड के साथ हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं एट टाइम्स। आई एम अनएबल टू कोप अप विद माय हेल्थ। मतलब बहुत ज्यादा बैंड बच जाती है मेरे हेल्थ की। तो आई जस्ट वांट टू नो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ अलोंग विद द वर्क, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब होता ही है ना, एवरी मंथ वी ब्लीड, ये वो फलाना ढिमकाना, तो बहुत ज्यादा बैंड मेरी तो बज ही जाती है। आई थिंक लाइक क्विटिंग सम टाइम्स के, छोड़ दो, छुट्टी पे चले जाओ 1 महीने की, मुझे कुछ काम वाम नहीं करना है। बट फिर ऐसे रियलिटी चेक मिलता है कि नहीं भाई, इतनी लंबी छुट्टी पे नहीं जा सकते हैं। और फिर इतनी लेजी हो गई हूँ मैं जब से ये कोविड हुआ है। पहले फिर भी मैं एक्टिव थी, अब नाउ कुछ भी वर्कआउट नहीं, कुछ नहीं। मतलब मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। लगता है ठीक है जैसे चल रहा है, रूटीन सही है, बट फिर हेल्थ और ज्यादा खराब हो जाती है। तो आई जस्ट वांट टू नो हाउ डू यू गाइस कोप अप विद दैट। वन बाय वन बताओ सब। Okay, I'll go because nobody else is. But I think Ruchira may have something to add to that, and maybe वो तो as ग्लो well. कर रही है अभी, उनसे तो ज्यादा टिप्स लेने चाहिए। जो मतलब ठीक है ये। Maybe I'm not qualified to answer this, or maybe I'm qualified. I'll give my bit afterwards. You can guys can go to it, because I feel like you need to be very picky while choosing projects, especially as a freelancer. Problem what happens is things come your way, and you saying no to work is something like a sin. Generally, people think like that, and then pick up suddenly, and you are overloaded now. And maybe that's one thing you need to be choosy while picking. That one thing can help you a lot. You should think on those lines. Other things, yeah, definitely Mansi and Ruchira all can add together whatsoever they feel. Yeah. Okay, so for me, the biggest one has been boundaries. Boundaries are super important where your clients are concerned. I started out like a freelancer, and I started out way back in 2008 or 2007. In 2007, for 1 year, I did freelancing. After that, I started the company. But essentially, there is, so I mean, it's a very bad thing to say, and I'm trying to say it in a nicer way. But essentially, people behave with you the way you train them to behave with you. Yeah, I think. Okay, so if you train them saying that it's okay to call me anytime in the night, it's okay to call me on the weekend, it's okay to give me work at any time, I'll take it up. You understand? What they're going to do is they're going to do exactly that, because you have not made your boundaries very clear. So for me, and this is when I started doing this, it was never heard of in the market. Okay, because we are an agency. Agencies are supposed to be available 24/7. Okay, so I put my foot down with my clients. I kid you not. Way back in 2012, I was told that my agency will not survive.
Okay. because I'm saying no to weekends and because I'm saying no to working after 7 o'clock. Like if you give us work after 7, the work will get pushed to the next day, or it will happen according. So I'm very strict with my team and I'm very strict with my clients, saying you will not work beyond 7. You will not work on weekends. So both the Saturdays as well as Sundays is off. Even And if this it's is very urgent, like you don't nothing is work on urgent. weekends. I'll tell you something. We are in the marketing field, right? Nothing is urgent. You are not a surgeon. Nobody's losing their life. Nobody's losing their jobs. They are all going to remain where they are. It is urgent, meaning what the client has made screwed up, has not given it to somebody on time, and therefore you are getting it late. That's not your problem. You are not there to service them 24/7. And if you choose to do so, then remember that your health is going to suffer. Right? So people get scared when they hear that I'm doing this. And a lot of times I have been told, trust me, I've been told many times that you will not get big projects. You will not get, whatever. And I'm like, screw everything. Sorry for the language, but I'm like, F everything else. I am going to do exactly what I want because I want to ensure that I survive. My health is more important. My mental space is more important. My family is more important. Right? So you have to give your mental space. And according to me, boundaries are the only thing that work out. Now, the easiest way I can tell you to say no to a client in a very beautiful way is to say, sure, we can do this on a weekend. We will charge you double the price. I will guarantee you, I'll write it in writing. If it is so urgent, they will pay you that double price. If it is not urgent, they will not pay you. They'll say, it's okay, we'll do it on Monday. And this has happened to me. Best. Nice. Yeah. So, But I you mean, this need is like, guts. Actually, what Mansi is telling, life without guts, I'm able to, it's very interesting, this thing, but when it comes to, let me add some context to this, what Mansi is telling. Because when you are a newbie, sometimes now you don't have the guts to do all this. But again, how you can always do it is like when you're not dependent on the client's revenue, when you have that extra finance and you not have your own liabilities. What some people do a mistake is Right. initially they set up an agency, they start hiring, they build an office, everything unnecessary capital costs people increase, and that pressure and burden is always there, so that you are always on pressure to build that every month I need to get this much revenue. In that pressure, you start doing all this stuff. So for newbies, I think you need to be picky and choosy while you take up projects and all, and to reach that level where Mansi already has established herself. Maybe थोड़ा case studies बना लिए उसके बाद थोड़ा she got better. Maybe I'm again wrong or right because she's laughing, she's smiling, so that can be different. So here I think we need to think on those lines, because once people start getting into that what we say monthly इतना पैसा मेरे को आना ही है, maybe somewhere you start getting into that this thing. Yeah, Mansi, please. Okay, so I will just add to this what he's saying. It is not true that you cannot do this as a newbie. You can do this as a newbie. You just have to do it in a slightly different way. So I'll give you an example, right? If you are a newbie and you want to get client projects, you do expectation settings, and this you have to do whether you're a newbie or a person who's been doing this for many years. Always, whenever I go in for a client meeting, it is very clearly written in my contract, and I reinforce that on a meeting call, saying yes. So I reinforce that on a meeting call, saying that we don't work weekends, so please ensure that your team gives us the stuff on time. And if they say that we are, or I directly say that if I see the client and you have to be good at sales to do this a little bit, but if you see the client is wavering, they're like, no, but we require weekends, say that, okay, but we charge double on weekends. Is that okay with you? So the moment that they hear that, they are going to know that you're not. So imagine this, right? You're children, when they are with each other, there will be one child who will bully all the other children. He will come and he will slap the person, he will say something, he will whatever, right? That's exactly how clients behave. They will try to intimidate you. They are not doing this because they are bad people. They're just doing this because they are desperate. And you are allowing it. So boundaries are extremely important. Like you have to, whether you're a freelancer, newbie, oldie, doesn't matter.
You know, so for me, I'm very clear that, and you're right, it does become better as you become more confident. Like you're able to say no more often as you become more confident. Initially, you do a little bit either other projects and you sort of this thing. But remember one thing, people, those type of people will come to you. If a client is a bad client who's giving you stuff last minute on the weekend, he is going to attract more such clients to you. So the choice is that do you want those kind of people to come into your life, right? That is that's the real question. Yeah, and interestingly, when the client, you get a client, good client, because I told Mike, I am working with one client for influencer marketing. She is from Norway and she doesn't work on Saturdays and Sundays. And I told I also don't work on Saturdays and Sundays. I'm happy. And now she will also, she's also okay with that. So it's a great combination. So how you pick and choose definitely matters a lot. Because those kind of clients attract more of those kind of clients. And you know, put you in the trap. It's not you are putting yourself in the trap, you know, because you are saying yes, right? So they will refer you to, if you have a bad client, they will only, and if you're going out of your way to do things for that client, that person will only refer you to other bad clients. Like attracts like. No, sometimes it's about like why we say yes is we just analyze, okay, the client is paying good also, and जैसे कि गोवर्धन जी ने कहा कि sometimes जैसे होता है ना कि we do not have that constant revenue and we are dependent on a lot of things, so वो चीज है. But yeah, I like the things you just said and I think I am a fan now. मैं भी यही करूँगी अब. You should try it. Tell me how it goes. मैंने किया है क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ होता था ये. नहीं, फिर क्या होता है, people start thinking that we are rude. जो होता है ना कि you just said there's a way to talk, right? But sometimes if we are even saying it in a polite manner, the other person will think, अरे यार इसके ये मतलब ये क्या है भाई, इसके जैसे 100 है करने वाले, इसको कैसे बात की अकड़ हो रही है. तो वो people don't understand. और generally मैं बोलती हूँ इंडियन clients तो समझते ही नहीं है. ना ऐश्वर्या, ऐसा नहीं है. See, there are different kinds of people. Some people, though they're good, their clients, they value you as a human. They will have that kind of conduct. They conduct themselves well. They don't try to look down upon someone because we are paying. It's not like everyone is like that, but some people are like that. Now we should start getting rid of it at any cost. That's how you build your this thing, because you think some people will tell the client to ऐसा ही बोलेगा. It's not like everywhere. It's not like that. So it's based on the experiences. Yeah. It's like somewhere. There, like I said, when I started doing this, that was 10, 12 years ago, right? When I started doing this, nobody had even heard of it. It was like, how dare, first of all, you, and I'm telling you, we work with big businesses, right? So we are working with businesses that have like 10,000 employees, 5,000 employees, you understand? So they are these big marketing guys with big egos and stuff like that. So they will turn around and say, but we have 10 other agencies you work. I said, that's fine. You work with any agency you want. Why are you coming to me? If you're coming to me, that means you saw something that you like. I'm not pitching to you. Right. So they were like, it was very clear to me. I said, I'm sorry, but this is my policy. आगे आपको जो करना है आप करो, दूसरे के साथ काम करना है करो. Here's another thing. Okay, so when I'm talking about persuasion, and this is what I'm talking about, right? That person convinces. Persuasion is not you doing something to somebody. Persuasion is when they convince themselves that you are good. So I'll give you, and this is reverse psychology, right? The moment you say no to someone, they get interested because they're like, ye nahi kyun bol rahi hai? Why is she saying no? And how dare she say no? That means ya to she's that good, or that bad. And immediately the demeanor changes like this. So I have seen this in action. And I use this very effectively. The moment I remember, there have been 4 or 5 clients who I have said no because I didn't want to work with them. They've come running after me after I've said no. Oh, ये मेरे साथ भी हुआ है. हाँ, exactly, because they are like, ये नहीं क्यों बोले? How can you say no to business? And I'm like, I can say no. मानसी जो बोल रही है वो वीडियो बनाऊं और जितने भी क्लाइंट्स है सबको भेज के नो लिखती नहीं बोलो खुद से, जो तुम्हारा जो है वो बोलना अलग होगा. Yeah. No, you said I'm not rude. I'm not being rude to them.
I'm just telling them that ये मेरे से नहीं जमेगा, आप किसी और से काम करवा दो. The moment they say आप किसी और से, मतलब they are like, but why? But why can't you work with me? I am rejecting you, right? So they're like, but why can't you work with me? So that is, they are persuading themselves, thinking इसमें कुछ है. Whether it's true or it's not true, that is to be able to see later on. But that's what I'm talking about. Some of them think, और some of them मतलब वो बोलते हैं ठीक है नहीं करना छोड़ो. कुछ क्लाइंट जैसे भी होते हैं जो लेट को कर देते हैं. फिर से आते हैं, वो आपको स्टॉप करते हैं, फिर वो 2 महीने बाद फिर से आते हैं. मैं सच बता रही हूँ, मेरे साथ हुआ है ये. रीमार्केटिंग कर रहे हैं वो. हाँ, रीटारगेटिंग वो खुद करते हैं, वो स्टॉप करते हैं. वो देख लेते हैं कि यार नहीं, ये जिनको हमने काम दिया था उनसे नहीं हुआ है, तो वो वापस आते हैं. मेरे साथ हुआ है, 2-3 क्लाइंट्स के साथ हुआ है, स्पेशली डॉक्टर्स के साथ. You can't say no to work. आप अगर no to work बोल रहे हैं, मतलब आपके पास इनफ काम होता है तभी आप no to work बोल भी सकते हैं. So they also think that way. दूसरा ऐसा भी सोचते हैं लोग. And जैसा मानसी बोले, the psychological trick always works, persuasion, because they are being rejected now. They're trying to qualify themselves to make it meet. And how can an agency set out such kind of rules if they're not successful? एक mindset आ जाता है ना, because that's how things work nowadays. क्योंकि some big brand is launching a small collection saying limited edition. How can something be limited edition, boss? Anything can be made, whatsoever content, but that gets a lot of interest, attention, everything. That's how you market yourself. So I think a lot of interesting lessons to learn from Mansi today. It was a great. She gave good tips, because generally we don't get to listen or talk very close. It's lucky that we are very less people, so we are able to tap into each other's thoughts very fast. So I think it helped. So Mansi, any other things you want to discuss, or anyone who want to discuss on a specific note? I think either Seema should introduce herself because she's just come in. Yeah, yes, Seema, you can introduce yourself. आप अगर कैमरा में आ सकते हो तो और अच्छा है. If you can do that, it will be great. Hello. Hi, Seema. Yes. Hello, sir. Good evening. Sorry, I was getting late. Actually, I have a meeting with our corner clients. That's why. ठीक है, बोलिएगा, आपके बारे में बताइएगा. Just introduce yourself. आपके बारे में बताइए. Sir, I'm Seema Tiwari. I run a business marketing agency in Delhi NCR. Okay. I have been in this industry since 2016. Okay. 2016 से मैं इसमें काम कर रही हूँ. Okay. Myself is a Facebook ad expert and Google ad expert. और वर्डप्रेस वगैरह में भी मैं काम करती हूँ, बट डेवलपर की टीम मेरे पास अलग है. तो अभी जो बातें हो रही थी, बेसिकली मैं इसमें एक चीज पुट ऑन करना चाहूंगी आप लोगों के साथ. कि जब किसी क्लाइंट को ज्यादा ही परसुएट करते हैं ना हम लोग, तो वो थोड़ा सा ना बड़े ही बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं. और इवन सम टाइम अगर आपके पास काम ना भी हो ना, तो कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं ना जो इरिटेट करने वाले हैं, तो उनको अवॉइड करना मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता है. बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि हमारे पास राइट क्यों नहीं है कि हम अपने लेवल की, अपने स्टेटस की, अपने चॉइस के क्लाइंट के साथ काम करें. डेफिनेटली सही है. सबसे पहला जो है मेरा अपना एक मतलब एक्सपीरियंस जो रहा है कि हमें किस क्लाइंट के साथ काम करना है, किस लेवल के या किस माइंडसेट के बंदे के साथ काम करना है, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि काम नहीं हमारे पास तो किसी भी क्लाइंट को उठा ले. एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक क्लाइंट मेरे पास आया, उन्होंने कहा मुझे गूगल एड्स चलाना है. मैंने बोला सर आपकी बजट कितनी है, सबसे पहले आप ये बताइए. अगर वो 100-150 रुपया डेली का लगा लेते हैं और इसी पे कर लेंगे. गूगल एड पे मैंने कहा सर ये मोबाइल रिचार्ज करवाने की बात नहीं है, 100-150 रुपया का मोबाइल रिचार्ज करवा लो, 150 रुपया में कुछ नहीं होगा. तो कह रहा है कि मेरा दोस्त तो चलाता है, ऐसे काम करता है. मैंने कहा तो आप एजेंसी को फोन मत करिए, बिकॉज बीइंग एजेंसी मैं कम से कम 25,000 रुपया महीने का चार्ज करूंगी आपका कैंपेन चलाने का. तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं. 1-2 बार मैं भी फंस गई थी इस तरीके से. तो अब हमने डिसाइड कर लिया है कि सबसे पहले क्लाइंट का बजट पूछो, आप किस बजट में जाना चाहते हैं, आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है. देन आई विल मेक द स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू योर बजट. तो 150 में मेरा सर यही चलते, मुझे तो आज तक समझ नहीं है.
हाँ है, ऐसा लोग बहुत सौ लोग हैं। एक क्लाइंट्स मेरे पास आया, वो कह रहा है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट बना लेते हैं, हमें लारावेल और इसमें उसमें वेबसाइट बनाने की क्या जरूरत है, पीएचपी में वेबसाइट बनाने की क्या जरूरत है, आप लोग तो 50,000 रुपए ऐसे ही मुंह फाड़ के बोल देते हो। मैंने कहा सर मुंह फाड़ करके क्यों बोल देते हैं, आपका बजट नहीं है तो आप मार्केटिंग एजेंसी के पास मत जाओ, आप खुद चला लो। और गोवर्धन सर एक ना बड़ा मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइस। मेरा एक क्लाइंट था, उनसे हमारी बात हुई सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, और डील था हमारा 15,000 पर मंथ का। तो हमने उनको बोला ठीक है सर, आप एडवांस पेमेंट करवा दीजिए, मैं काम शुरू करवा देती हूँ। फिर उनने बोला, दैट वाज फर्स्ट लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम। ओके। तो मैंने उनका सारा कैंपेन वगैरह सेट कर दिया तीनों सोशल मीडिया पे, और उनका पेमेंट 8 दिनों में नहीं आया, 8 दिनों तक। फिर मैंने उनका काम रोक दिया था सोशल मीडिया का। अब पेमेंट भी उन्होंने नहीं किया और 8 दिनों में कह रहे हैं आपने सोशल मीडिया काम शुरू कर दिया, मेरे पास कोई लीड नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा सर, पहली बात तो सोशल मीडिया मार्केटिंग से ना आपकी ब्रांडिंग होती है, लीड नहीं आती। और चलिए लीड आ भी जाएगी तो ये इट्स योर लक। और सेकंड थिंग्स की आपका जो है ना, ये मैं काम बंद कर रही हूँ क्योंकि आप पेमेंट नहीं भेज रहे हो। अच्छा, उसके थोड़े दिनों बाद सर वो जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ, बंदा मेरे से कह रहा है कि आप ना मेरे सारे सोशल मीडिया का जो अकाउंट आपने बनाया उसका क्रेडेंशियल दे दीजिए, पोस्ट वोस्ट मैं खुद कर लूंगी, अभी लॉकडाउन कर लूंगा। मतलब कोई जेंट्स था कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो अभी मैं आपको 15,000 महीने का नहीं दे सकता, मैं पोस्ट वगैरह खुद बना के डाल लूंगा। तो मैंने उनको सिंपली बोला, मैंने कहा सर अकाउंट भी आप खुद ही क्रिएट कर लो। हमने चैरिटी करने का काम शुरू नहीं किया, हम नहीं करेंगे शेयर आपका क्रेडेंशियल। Yeah. तो गोवर्धन सर कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, इंडियन क्लाइंट के साथ आई एम टोटली फेड अप। पिछले 5-6 सालों में काम करके मैं फेड अप हो चुकी बहुत हूँ। प्रॉब्लम आती है। सबका एक्चुअली अपना शेर। मैं बताती हूँ क्या है थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम के, मतलब ना इंडियन क्लाइंट्स, या मैं भी अगर बोलूँ कि मैं भी किसी की क्लाइंट तो रही होंगी या होंगी, होता है, हमें भी प्रॉब्लम है, हम थोड़ा ना इवॉल्व धीरे होते हैं, ठीक है, मतलब कि ये होता है कि जैसे बाहर के क्लाइंट्स हैं उनका थोड़ा थोड़ा सॉर्टेड रहता है मैटर। मैंने ज्यादातर जितने भी इंडियन क्लाइंट्स देखे, जैसे कि अभी मानसी ने भी कहा कि कुछ कुछ जैसे डेस्परेट से हो जाते हैं ना, तो उनको पता नहीं किस बात की डेस्परेशन है, जैसे कि कहा उन्होंने अभी के वीकेंड पे काम नहीं भी अर्जेंट होगा तो उनको चाहिए अभी, राइट, तो वो पूरा ना सिस्टम मार्केट सब इधर उथर पुथर हो रखा है, और उस वजह से ही एजेंसीज फ्रीलांसर सब परेशान हो जाते हैं, और क्लाइंट्स पता नहीं मतलब क्या है, क्या देख के कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा, बट ये इशू है बहुत लोगों के साथ, मैंने नहीं, सुना। बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, वो ये है कि स्टार्टिंग में जब कोई एज ए फ्रीलांसर काम करता है या कोई छोटा स्केल पे काम करता है, तो बेसिकली हम लोग जो टारगेट करते हैं वो स्टार्टअप वाले बिजनेस को टारगेट करते हैं। और जो स्टार्टअप वाले होते हैं उनका इतना बजट नहीं होता, वो लोग सोचते हैं किसी तरीके से जुगाड़बाजी करके इधर उधर से थोड़ा, और अपना डिजिटल मार्केटिंग करा के मैं अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर लूं। लेकिन बेसिकली जुगाड़बाजी से ना डिजिटल मार्केटिंग होता ही नहीं है, मैंने जो चीज देखी है। उसके लिए आपको एक फिक्स बजट मतलब अलॉटमेंट करना पड़ेगा। Okay, so तो फिर I completely agree with Seema. Seema, आपने जो बोला है अभी, that is also a thing of education for the client, because उनको समझ में नहीं आता है डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है. So most of the times they don't even know. So our I think my internet connection is not very stable, but our job as marketers also, and I'm going to say now बहुत बुराई हो गई clients की, but I'm going to say something that I think we need to do as digital marketers or marketers in general, is that we need to educate the client about marketing, especially about the things that you yourself are doing. So if you take them behind the scenes and if you show them कि this is what we are doing for you. Now when someone says branding, उनको क्या समझ में आता है branding क्या कर रहे हैं? Positioning, मतलब उनको क्या समझ में आता है positioning? मैं जब बोलती हूँ persuasive communication, उनको नहीं समझ में आता है persuasive communication. For that's them why it is मानसी मैम, that's why मैंने कहा कि हमें पहले क्लाइंट को ना क्लासिफाई करना पड़ेगा कि किस क्लाइंट के साथ हम काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसे क्लाइंट मार्केट में मिलते हैं। मेरी बात होती है डेली लोगों से, कहते हैं मेरा बिजनेस ऐसे ही बहुत ग्रो कर रहा है, मुझे क्या जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग करवाने की, आपको 15,000 रुपए महीने का मैं क्यों दूं, आपको 25,000 रुपए महीने का मैं क्यों दूं, मैं टेली कॉलर रख लूंगा, मैं डेली टेली कॉलिंग करा लूंगा, कोल्ड कॉलिंग करा लूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक स्टार्टअप लेवल वाले जो बंदे होते हैं उनका बजट ही नहीं होता है एक एजेंसी को हायर करने का या एक फ्रीलांसर को हायर करने का। मैंने एक लंदन की क्लाइंट के लिए काम किया था, यू कांट बिलीव मी, कि मैंने उनका एक लोगो डिजाइन किया था सिंपली,
इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे तरफ से था कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट इनको एज मतलब फ्रेंड हेल्प करना है। बट उस बंदे को लोगो बनाने के बाद, यू कांट बिलीव मी, उस बंदे ने, लंदन का बंदा था, उन्होंने मुझे 50 पाउंड्स भेजा था। 50 पाउंड्स, मतलब आई वाज सरप्राइज दैट टाइम कि कोई बंदा इतना पैसा कैसे दे सकता है, 4,500 रुपया एक लोगो बनाने का। नहीं नहीं और वही सी सब टाइप के क्लाइंट्स है मार्केट में। लोगो बनाने वाला हमारे कम्युनिटी में ये एक बंदा 60,000 70,000 लेते हैं, बिकॉज वो लोगों के ऊपर इट्स लाइक नॉट जस्ट फॉर वेबसाइट, दे यूज इट ऑन ऑफलाइन प्लेसेस एवरीवेयर, दे थिंक अबाउट, बहुत दूर दूर तक सोच के लोगो बनता है। आप जो बोल रहे हैं ना, we charge 1 point something. या सर 8,000 रुपया 10,000 रुपया देते हैं एक लोगो बनाने का। वही बोल रहे, मानसी जी बोल रहे 1 लाख के ऊपर चार्ज करते हैं वो खुद ही। तो है But it's not, but it's not just the logo. Then it's like a full brand guideline that we are creating for them. We're just it's a guideline to their brand. That's what we're creating. It's not just logo banaya or de diya. It's not that. So then there's a lot of thinking, positioning, and everything. Thinking is going behind. हम लोगों को करना ये है कि यहाँ पे ना अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर इसलिए किया जा रहा है कि इस तरीके के, मतलब हम अपने क्लाइंट को चूज करने के लिए, क्लाइंट से इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब क्या मतलब रास्ता निकाला जाए, कोई देयर इज समथिंग लाइक वे आउट, सो दैट कि वी कैन प्रेजेंट आवरसेल्व्स, आवर सर्विसेज टू देम, टू द राइट पीपल। कहने का मतलब मेरा है कि वी शुड प्रेजेंट आवर सर्विसेज टू द राइट पीपल। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होता है सीमा जी, लाइक सी आई एम टेलिंग यू, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव देयर ओन पोजीशनिंग, जो आप मार्केटर बोलते हैं अपने आप को। एंड इफ आई आस्क यू, यू विल से, जैसे ऐश्वर्या को पूछता हूँ, ऐश्वर्या व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन इन कंटेंट? If she gives me an answer right now, we can analyze on that. Niche down. No, first you अभी ऐश्वर्या को पूछता हूँ कि what is your specialization in content? So that's where the problem comes. क्या होता है ना, हम लोग अपने को niche down नहीं करते हैं, हमारा कोई पोजीशन नहीं बनता है, then we are competing with every Tom, Dick and Harry. Then definitely you can't charge, you can't command, you can't demand. जैसा मानसी जी क्या कर रहा है, ऑलरेडी आपने आपको पोजीशन कर रखा है, लाइक बिजनेस जो भी कर रहा है, so you don't have a position, you do everything like all others are doing. So I was having a call with one of the niche marketers only recently, and that guy is very good with SEO part. Then he's telling now they are thinking of niching down. Then I told, okay, how you niche down? Then I told I will say myself as a SEO marketing agency. I told, don't do that. SEO is not a niche. SEO is okay, it's a niche, but don't do that. Instead of trying to do that, you go with combination of SEO plus industry verticals. Brands will care about the industry, not about SEO. No one wants to do SEO marketing. You brand yourself as an organic marketing agency, something like that. You go that route. So you try to brainstorm here and there. Maybe Mansi ji also can throw some light on this thing, because he is also very good with positioning part. We had one of the sessions also there. So I think we are all doing it wrong. Trying to be everything to everyone. What happens is we will end up being the same other agency. So how can you command? How can you set rules? How can you charge more? Not at all possible. I'll just add to whatever Govardhan is saying, because it's a very crucial point. And this is true whether you're marketing or you're any kind of business, it doesn't matter. So there are two aspects of this. One is the who and the other is the what. So who is the person that you're targeting? What is what you're doing for them as a service? So if your who is big, that means your what has to be very small. If your what is big, then the who you're doing it for has to be very small. So let me give you an example of that. So if you are, let's say, like he said, SEO is small, right? So that's a what, which is small. Then the who that he has can be bigger, right? Whereas, and he can even specialize further in that what he's doing, right? For us, we are a branding agency. That means our what is big, right? So then the who that we go after is very small. So for example, we go after only B2B. We don't do B2C. We don't do e-commerce businesses. We work with manufacturing industries. We work with financial services industries. We work with IT services, service firms, only B2B service firms. So we are very, very clear
that okay, we are not going to work with anybody else, because our piece of the what that we are doing is very big. Branding is a big piece, right? Yeah. So that's the idea of doing your niching. If you can niche like that, where you're saying that okay, if I'm going to do, for example, Aishwarya is doing content, so if you're doing content, your what is big, it's huge, right? So then your who has to be very small. So the person that you're targeting can be as small as, I'm only going to do it for, give me an example of one of your industries. One of the things, healthcare. So healthcare would be even niche down for the hospitals. I will only do content writing for hospitals. Then you become the person to go to for hospital related content writing. Yeah. Making sense? Yes, So, हाँ सही है. मैं जैसे मैं डॉक्टर्स के लिए कर रही थी तो मुझे ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. मैं गायनिक के लिए भी कर रही थी, मैं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी कर रही थी, मैं ऑर्थोपेडिक के लिए भी कर रही थी. मैं सारे जिस टाइप के भी डॉक्टर सारे थे, मैं सारे ही डॉक्टर्स के लिए मार्केटिंग कर रही थी और सभी टाइप के हॉस्पिटल क्लिनिक के लिए. फिर मैंने उसमें भी नीच डाउन किया कि मुझे सिर्फ अभी गायनिक के लिए ही करना है या फिर सिर्फ मुझे अभी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के लिए ही करना है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है. तो अभी मैं ऑर्थोपेडिक हूँ. ऑर्थोपेडिक exactly. Now, वो भी let me सर्जन है, tell you. मतलब उसमें भी मेडिसिन वाले नहीं है, वो सर्जन है सिर्फ. Exactly. So now let me tell you how this will help you in your marketing, right? So when you're, and Seema ji, this might help you understand when you're marketing yourself. So if she's doing only, let's say, Gynax, when she talks to her audience on content on social media, she will only talk about the problems that Gynax face in getting leads, for example. Okay. So you've already had the experience and now you're using that to say, this is the problem that you're facing, and therefore. And the live example of this was when I did it for LinkedIn. I just made a few posts about manufacturing guys, because we are dealing with B2B manufacturing people. So I talked about manufacturing people. Trust me, my inbox was full. I am full up with work. I stopped doing LinkedIn content only because I can't take on any more work. So you're understanding the idea of niching down, and exactly the topic for niche marketers is that if the smaller you go, the more of an expert you look like, because you are going only with that particular niche. Then you can, as you become an expert in that niche and you're getting enough leads, you can expand to one more. So Gynax, say you can probably go to an orthopedic. Another one, you can add layers to that. But that will be after a year or 2 years, maybe, you know? Right. That's the way to actually filter down, and then you become so good that nobody go on and tell you something. Recently I got someone coming in and they said, we are deciding between you and 3 other agencies. I said, okay, decide. They're like, but you are the only people who are doing B2B. Nobody else is doing only B2B. You see the difference in their minds? Mindset. We went from being one of the 4 agencies to being the first 2. I'll let you guys know the results soon, but I have a feeling that we'll win because we are the only people who are doing B2B. And we I come tell up you, first. Many people know me as an email marketer. But I'm good with organic marketing basically. I do social media, everything. I'm good with that part. But I position myself as email marketing. Like the positioning itself is like anyone who in our community is now something comes up, they'll tag me. Because I have positioned myself for email marketing. So, and recently I came across one guy, he talks about he's a restaurant marketing guy. He says, I'm a restaurant marketing guy. So now what happens? It's very easy to remember that person. Very easy to remember. Avi Arya also does that, na? Who? Marketing for hotels. Avi Arya. He does marketing for Avi hotels. Arya is a hotelier, that's okay. That also, yeah, that's what I'm saying. That's how Avi Arya also positioned himself. I think he was the first person जो मतलब मैंने देखा था. I met him in 2019 in a conference, and तब I came to know अच्छा ऐसे भी हो रहा है digital marketing में सिर्फ उसके लिए, क्योंकि उससे पहले मुझे तो कोई idea नहीं था. He was also positioning himself like he's creating his own story. He always says the same thing. I'm a father of 2 racer, girls, 6 dogs, father of dogs and cats, whatsoever he talks. So he also teaches people. Some people started copying him blindly also. That also has happened. So we should not copy anyone blindly. But again, when you position yourself, and I also ask people now, if you already have 10 clients you work with, also see what's the most profitable ones, what are the most less headache ones you're getting. If you're able to find some patterns, within 10 clients, it will be tough to decide.
But if you really work for 1 or 2 years now, you'll be able to find patterns. If you're able to properly, mindfully sit down and write everything, you'll be able to document it now. Then you see, yeah, इसमें headache कम है, कॉन्फिडेंस भी पैसा भी आता ज़्यादा है. है, हाँ. and you're gelling well with that kind of. See, B2B is a space. It's a different space. B2B is very long because I work with B2B company, so sales cycle is long. So we need to be very, very empathetic with the buyer personas. Sometimes there are multiple buyer personas and all. Whereas B2C game is different. B2C you can experiment. B2B also people experiment, but B2C you have a lot of room to play with colors or with whatever you do, messaging and all. So when it comes to marketing, you need to see that the niching down part. I think you should not try to just niche down for the sake of niching down. You should have a systematic approach to that ना. People say that अरे niche down करना है तो कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप काम करो, अच्छे से काम करो and try to resonate with, because I picked influencer marketing and email marketing or whatsoever resonates with people na, like you talk to people, you create empathy and build, because I sold services and books on my diabetes site because I was able to create authority for myself. I sold diet plans to doctors, and that happened because, and I was even surprised, like I was like initially shocked and said, I'm really confused in this situation. I'm not even a medical professional, I'm not even a nutritionist, but you are a doctor. Then they told it's okay because you whatever you wrote actually says that you know what you're talking about. They saw my articles, they saw my blogs and all. They were convinced that. So inbound always gives a very big advantage when it comes to, like Mansi was telling. When you have inbound leads, na, you have a lot of authority, and you can choose your terms conditions in inbound. I saw that, and that's the reason you need to work on your own branding, own positioning, which Right. also the marketers are not doing. So we need to think on those lines as well when it comes to reaching down, or that's the problem we are facing now. I think, see, Ashwarya is there, or Ruchira is there, for the fact Seema is there. We don't have that necessity to actually chase numbers. Money is always there, but if you're able to take a deep breath back and set up, have some cushion for the finances, and try to understand in this 1 year I want to get these dream clients. These are the clients I want to work with. Then your positioning, your activity, everything will change. Right. Maybe that's my point of view to this discussion actually. Yeah, I think we are having a very close knit discussion, but I think it's very useful as a recording also. People will definitely take a lot, not just for the sake of Women's Day, but it I was a think good अब थोड़ा discussion. वो भी होना चाहिए जो क्या आप बोल रहे थे, आज डिसाइड हुआ था ना कुछ क्वेश्चन आंसर या पता नहीं नहीं क्या था. गोवर्धन सर, मैं एक बात कहना चाहूंगी. थोड़े दिन पहले आपका और मानसी मैम का एक इंटरव्यू मैंने देखा था फेसबुक पे, आप लोगों ने रिकॉर्ड किया था. मानसी हाँ. मैम ने उसमें एक बड़ी अच्छी चीज बताई थी, और मैंने वहां से मतलब खुद को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश भी करी थी कि नॉट ओनली नीच, नीच के अंदर भी ना माइक्रो नीच होता है. तो अगर हम सारे मतलब इफ वी स्टार्ट वर्किंग विद ऑल इंडस्ट्रीज, तो हमारे लिए भी बड़ा अजीब सा होज पोज सब बिल्कुल बन जाता है सिचुएशन. तो किसी भी रियल, सपोज दैट आई वर्क विद रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज, तो उसमें भी हमने फिर माइक्रो नीच डिसाइड किया कि हमें बिल्डर के लिए काम करना है या ब्रोकर के लिए कर रहा है, हमें कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए काम करना है या रेजिडेंशियल के लिए करना है. तो मेरा एक्सपर्टाइज फिर एक्चुअली वी आर आई एम एक्सपर्ट ऑफ लीड जनरेशन बाय पेड एड, पेड कैंपेन. तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है, अदरवाइज मार्केटर फिर आगे ग्रो नहीं कर पाते. क्योंकि सपोज दैट हॉस्पिटलिटी के लिए, होटेलियर के लिए, हर इंडस्ट्रीज के लिए मार्केटिंग करने का जो स्ट्रेटजी होती है बिल्कुल डिफरेंट होता है. किसी इंडस्ट्रीज के लिए आप मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और सपोज दैट इंस्टाग्राम पे. किसी इंडस्ट्रीज के लिए मार्केटिंग जो होती है वो लिंक्डइन के थ्रू होती है, यूट्यूब पे होती है. किसी इंडस्ट्रीज के लिए मतलब ट्विटर पे भी हम कर सकते हैं. तो इस कंडीशन में नीच डाउन करना बहुत जरूरी है. इफ यू वांट टू बी अ एक्सपर्ट इन एनी इंडस्ट्रीज, ये तो हुआ क्लाइंट की तरफ से आपको नीच डाउन करने का, कि किस इंडस्ट्रीज के क्लाइंट के लिए आपको काम करना है.
सेकंड थिंग्स, आपके डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत बड़ा वर्टिकल है, तो उसमें यू कांट बी एक्सपर्ट ऑफ ऑल द यू नो services, like one can't be expert of all the services like Google Ads, website development, developer और social media marketing, SEO. तो मैंने जो डिसाइड किया हुआ है मानसी में, मैं आई वुड लाइक टू से थैंक यू कि आपकी जो वो इंटरव्यू देखने के बाद मैंने अब मेरे बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैम दूर हो गया। तो मैम मैं मेरे को आपको एक कंफ्यूजन once है। again once again I would like to say thank you so much। आपका इंटरव्यू देखने के बाद मतलब मेरा जो है ना ये बहुत बड़ा, मेरे माइंड का जो मैसअप था वो एकदम क्लियर आउट हो गया था। उस टाइम से हमने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया मैं एक इंडस्ट्रीज में काम करूंगी, रियल एस्टेट में, और मैं एक चीज पे काम करूंगी कि मुझे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लीड जनरेट करना है। और उसके लिए मैंने कई चैनल ट्राई किए और मैं उस पे आज के डेट में आई एम हैप्पी विद माय जॉब। एंड आई कैन से कि मैं एक गूगल एड एक्सपर्ट हूँ और मैं 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक की प्रॉपर्टी के लिए लीड जनरेट कर रही हूँ आज की डेट में। इसका बस एक ही सीमा जी, आपको जी अभी जो जो लोग देख रहे हैं, अगर if there is anyone watching live on YouTube and the people out here, कोई भी आया with a high end property is going to say कि अच्छा आप सीमा जी से बात कीजिए because it's a good referral engine. Now we know what you stand for, right? So we are just going to refer leads to you. It's an amazing referral engine that you've created for yourself. Congratulations. Ma'am, you can't believe me, I have generated the lead for Damek property. It's based on Dubai. उनकी जो स्टार्टिंग प्रॉपर्टी है 3 करोड़ से है। तो मतलब इस तरीके से काम करने के बाद फिर मुझे लगा कि हाँ, एक्सपर्टाइज अगर करनी है तो एक नीच डाउन करना पड़ेगा, एक इंडस्ट्रीज में आपने काम करना है। इससे पहले मेरे साथ ही मैसेज हो रहा था। नीच डाउन करना भी होता है सीमा जी, एंड आल्सो ना यू नीड टू कंटिन्यूअसली ब्लो योर ट्रम्पेट। मतलब जहां जहां जरूरी है करना पड़ता है, बिकॉज पीपल विल वेरी वेरी इजीली फॉरगेट। आप एग्जिस्ट भी करते हो मार्केट में, दैट्स हाउ इंडस्ट्री इज। एंड आई थिंक ये सब चीज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस स्टफ इन निच मार्केट्स आल्सो। सी वी फोकस ऑन वेरी लेस पीपल। मेरा फोकस हमेशा क्या रहता है, whoever is getting engaged, let us try to give as much value as we can. Never focus on big numbers. मेरा एक ही फोकस रहता है कि ग्रुप का मतलब 10,000 मेंबर होना चाहिए। दिस इज नॉट माय फोकस। हमेशा आई ट्राई टू सी लाइक ना how we can actually provide value to this close knit people. So the same way, if you clients also आप कम ही लोग को पिक करते हो, you are able to provide value, अच्छा लोग को पिक कर सकते हो। So we need to have that caution and mindset कि सब लोग जैसा भाग रहे हैं वैसे ही हम भागते जाएंगे तो वही बनेंगे हम भी। So that's very very important। तो आपके साथ एक क्लैरिटी आ गई तो that's a very good thing। क्योंकि that episode we did मानसी जी के साथ हम अनप्लान्ड किए थे। मैं उनको ऐसा ही बुलाया जूम मीटिंग में, जस्ट आई स्टार्टेड। क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ ना, एक बार आदमी मिल गया छोड़ना नहीं चाहिए, रिकॉर्ड कर दो। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत प्लानिंग कर करके ना टाइम बहुत हो जाता है। समटाइम्स इट गेट्स वेरी डिलेड एंड ऑल। सो समटाइम्स आई एम वेरी स्पॉन्टेनियस, बट luckily Mansi was also means she also readily agreed। or sometimes generally women generally they need a prior notice, generally they don't want to just get on the camera। Govardhan ji, people have a hard time getting me to stop talking. so you have no issues whatsoever। One thing I would like to share with all of you कि जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का बेसिकली जो इंडस्ट्री है, इसमें काम करने वाले बंदे को जॉब के अलावा मतलब क्लाइंट्स के लिए जो हम काम कर रहे हैं उनके अलावा हमारा डेली रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए कि मुझे अपने आप को भी अपग्रेड करना है। बिकॉज जो चीजें हमने 2 साल पहले सीखी है वो आज की डेट में काम नहीं कर रहा है। तो अगर हम मार्केट में अपडेट नहीं रहेंगे तो फिर एक्सपर्टाइज आती नहीं है उसमें। और जो मार्केट में क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स दे आर नॉट गोइंग टू पे अस फॉर व्हाट वी आर प्रोवाइड देम, they only will pay to us what we are how we are making them beneficial। वो खाली ये बोलते हैं कि जो पैसा हम आपको दे रहे हो बदले में आप मुझे उससे क्या बेनिफिट करवा रहे हो। तो वो जो वे आउट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम लोगों की होती है कि हम किस तरीके से कैसे उनको ROI प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूंगी कि सभी डिजिटल मार्केटर को, वेदर इट इज ओल्डर एंड यू नो वेदर इट इज यंगर, न्यू भी है या कोई एक्सपर्टाइज है, सभी के लिए मतलब काम के साथ साथ
अपने आप को अपडेट करना Upgrade एंड एजुकेट करना बहुत जरूरी है, ये अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मैम एक चीज बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे जिन्होंने एक पोस्ट बना करके कैनवा के थ्रू और कंटेंट इधर उधर से लेकर डाल दिया, वो समझ जाते हैं कि हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने कर लिया है। बट अगर मेरे से आप पूछेंगे या कोई मेरे से बोलेगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, तो मैं उस पर 1 घंटा लेक्चर दे सकती हूँ, मैं लोगों को बता सकती हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग को कैसे स्ट्रेटेजिकली उसको। सीमा जी एक बात बताता हूँ ना, हमेशा नेवर थिंक अबाउट ऑल दोस पीपल, वो हमेशा मार्केट में है। बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं, मैं बोलता हूँ कि डोंट वेस्ट टाइम ऑन टॉकिंग अबाउट अदर पीपल व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज मार्केट में मतलब सभी 100 type रुपए के का लोग 100 रुपए का चप्पल है, सैंडल है, एंड देर आर 5,000 10,000 50,000 1 लाख रुपीज का भी सैंडल है। सो हाउ आर दे एबल टू सेल इट? डेफिनेटली। So we need to think on those lines. Don't worry about those people. हम अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहिए। डेफिनेट करने के लिए we need to upskill ourselves, जैसा आपने बोला, we need to take time to learn, अपडेट करने के लिए। तो not only marketers, anyone, we need to take time for learning. And recently मैंने भी एकदम रिचुअल स्टार्ट किया कि every day I'll spend at least 1 to 1.5 hour for learning, upgrading myself, knowing new things. Especially Web3 is coming up. So I have picked up some topics to learn on the psychological front as well as means personal well-being, personal एक growth होता है ना, as a person how you evolve। एक तो business as a businessman, क्योंकि marketer बन के रहना, you can't grow if you just know marketing, you should know business also। Doing business is having more dynamics, बहुत ज़्यादा angles होते हैं उसको। Then you need to also understand marketing because it's very very dynamic। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा चीज होता है कि ना कीप्स चेंजिंग। एंड फेसबुक 6 महीने पहले जो लोग अपने आप को फेसबुक एक्सपर्ट्स बोल रहे थे, आज की डेट में उन लोग सब सर पकड़ के बैठा हुआ है कि यार फेसबुक में क्या चल रहा है, changes हो समझ में गए। नहीं आ रहा। They're not even able to measure। उन लोगों की सर लग समझ में नहीं आ रहा है उनको। उन लोगों की सर लग गई है, बहुत अच्छे से लग गई है। जब से ये iOS 14 का अपडेट आया है ना, 50% लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। सस्पेंड हो चुका है सीमा जी। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, इवन आई सॉ क्रेडिबल मार्केटर्स आल्सो स्ट्रगलिंग, नॉट लग गई ओनली जो फेकू वाला नहीं, बिकॉज़ iOS 14 अपडेट आया, वो तो बोल रहे हैं दे आर नॉट एबल टू मेजर। अगर मेजर ही नहीं कर पाओगे तो उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर पाओगे? लाइक दैट इज हाउ थिंग्स आर। मेरे साथ रिक्वेस्ट आया है कि वी नीड टू डू अ लाइव सेशन ऑन फेसबुक मार्केटिंग, जो iOS 14 अपडेट को लेके वी शुड टॉक एंड ऑल। सो आई थिंक अपग्रेडिंग सीमा जी इट्स लाइक नेवर एंडिंग स्टोरी। लाइफ में जिसको भी मतलब आगे बढ़ना है, अपग्रेड करना ही है, दैट वी नीड टू डू। सीमा जी, मुझे तो आपको देखना है, मतलब मन कर रहा है देखने आप फोटो दिखाओ भाई, कैमरा ऑन करो। मैम एक्चुअली हाँ मैं करती हूँ। एक्चुअली मैं ना मोबाइल से बात कर रही हूँ, तो इसी वजह से वेट जस्ट अ मोमेंट, आई विल डू। हाँ बिल्कुल। I think मैं मोबाइल से now we're actually मोबाइल 1 hour 15 minutes from the session. So you guys, it's fun. I'm enjoying it, but again, we can just conclude it. We can have some discussion and we can conclude it and we can complete it up. I think all of you are able to see me. Yes. So this is the my point of view, and मैं तो ये मान के चलती हूँ कि अपग्रेड करना ज्यादा जरूरी है। अपग्रेड नहीं रहने से we can't be an expert in any segment of digital marketing। मेरा अपना जो है खुद का एक, मैंने जो भी कुछ शेयर किया है अभी, वो सब अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मतलब कहीं से पढ़ के नहीं, बट मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने शेयर किया है। निकलती है ना, हमेशा एक्सपीरियंस से निकलती है। काफी सालों की मेहनत है। Definitely. मेरी भी बहुत बार निकलती है, बट मैं इंस्टाग्राम लाइव में जाके अपनी भड़ास में निकाल देती हूँ, और थोड़ा बहुत क्लाइंट जो देख रहे होते हैं, प्रीवियस क्लाइंट या जो चल रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं, डायरेक्टली बोल देती हूँ। जैसे मैं पर्सनल ब्रांडिंग करती हूँ अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करती हूँ। तो मैं अपने पर्सनल थॉट भी शेयर करती हूँ, और जो क्लाइंट के लिए वैल्यूएबल है वो भी शेयर करती हूँ, तो दोनों बैलेंस हो जाता है। So I think we got a very good interesting conversation, and हमने बोला है कि we also want to give a small certificate, and that certificate is not about just participation or something. ऐश्वर्या का idea था actually, and listening to Mansi today, I know her before also, but today listening to her for starting that different initiatives, I think the app title I'm thinking of 2 or 3. You can also help me out.
maybe it should be Mighty Mansi, or maybe it should be something like what we say, out of the box. Aishwarya, It please. should be Jhakas Mansi. Jackass. यही दो आप actually. Okay, okay. Maybe we can think of different titles. So we want to give it like a funny way. We want to give a small certificate. I think funny is good. Not funny, not funny. She's not funny Yeah. actually. No, as in मतलब funny title देना is good. Funny हाँ. मानसी तो नहीं. No, Dangerous yeah, मानसी but भी दे सकते हैं. I still feel, I don't know, Mighty fits very well with her. That's what मेरा एक Mansi personal would like opinion to है, but add I can think something, of I it. guess. So and talking to सीमा जी के तो मुझे लग रहा है कि we need to come up with a good title, क्योंकि वो एकदम openly she's able to share whatever she's feeling. इनको कह सकते हैं धाकड़ मार्केटर. आप धाकड़. टाइटल तो मेरे से ही पूछ लो. दिल से, टाइटल तो मैं ही बता दूंगी सबको. तो ऐश्वर्या को क्या टाइटल देंगे then? ये तो आप चारों सोचो. अब खुद के लिए नहीं आता है दिमाग में. मैं बाकियों का बता सकती हूँ. पहले खुद का भी बता देगी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मानसी मैम के लिए डिसाइड करो कि उनको क्या टाइटल देना है. धाकड़ मार्केटर तो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू. नहीं, झकास भी ठीक है, मतलब नहीं ठीक है, मानसी का तो हो गया. लाइक वी हैव 2-3 ऑप्शंस, विल फिट समथिंग माइटी और मे बी झकास, जैसा ऐश्वर्या बोला. या फिर सॉरी मतलब ऑफेंड मत होना, एक फनी सा आया है, नॉट योर कप ऑफ टी. बोलते हैं नॉट योर कप ऑफ टी. Oh my God, हाँ, ये वाला ज्यादा सही है. anything that disrupts the usual, right? I'm good with. Yeah, because you did that. So yeah, क्योंकि the things she just said in the session, I am impressed actually. मतलब मैं सच में अगर मैंने बोला कि फैन तो फैन, 2-3 चीजें तो मैं सोच रही हूँ सोने से पहले करके सोऊंगी अभी. अब ना है तो ना है भाई, खत्म. अगर कुछ प्रॉब्लम हुई मेरे पास नहीं आना. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. Everything will be on me. Actually, see, Aishwarya has a lot of time. She is she's like 23 or 24. I'm not sure. I'll be 24 in 3-4. Yeah, discussing women's age in this forum is not. I think she is very younger 4 than all months. of us. Yeah, definitely. She's the youngest of all of us. That's there. So she has time. She also works, so she has that liberty to take whatever she likes to take. But what I see is she takes good amount of work. I tell her to take less work. Choose, because you have the opportunity. Now you choose your work. That way you will be getting better. Because doing, it's good that you're getting experience, but what kind of experience you want to get, you have the opportunity to choose it. So choose. That's a way, like you can easily copy what Mansi is doing. But why she's telling don't come to me is because you can't straight away copy things. Yeah, we need to modify it here and there, then only it will work for you. So I'll leave डायरेक्ट मना नहीं बोल सकते. ऐश्वर्या तुम ये कर सकती हो, तुम सोशल डिटॉक्स पे चली जाओ और बोलो, बता के जाओ कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी. नहीं I was just, मैं ये नहीं कह रही हूँ एग्जैक्ट वाली कॉपी, बट यार समथिंग. ऐश्वर्या के लिए मेरी एक सजेशन है कि ना कहना भी ना अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छी चीज होती है. बिकॉज किसी चीज को अगर हम कंफर्टेबली अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स इजी टू से नो. आप ऐसे भी बोल सकते हो नहीं, इससे ज्यादा इंटरेस्टेड कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम मेरे पास है, तो योर प्रोजेक्ट इज वेरी इंटरेस्टेड बट आई एम सॉरी टू से. There was a close friend जिसको पता है कि I am into this, ठीक है, तो he came up with the requirement कि ऐसा है. अब दोस्तों के साथ में क्या होता है कि वो बोल तो देते हैं, बट 2 चीजों की प्रॉब्लम होती है. आपको उस तरीके से नहीं बोलना है, इस तरीके से बोलना है कि आपका जो एक्चुअली जो ऑफर है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आई एम श्योर, बट आई एम सॉरी टू से कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी इस बात को. इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, या तो दूसरी बात बोल सकता है कि अभी बैंडविड्थ नहीं है मेरे पास, आई एम वर्किंग अलोन, सो आई डोंट इनफ. अभी मेरे साथ रिसेंटली मैं सिंपली एक चीज बोलूंगी. अभी मेरे साथ रिसेंटली ऐसा हुआ था. एक फ्रांस का क्लाइंट था मेरा, उसने उनका ई कॉमर्स का बिजनेस था. वो उन्होंने बोला सिंपली कि सीमा आई डोंट वांट टू हायर यू, आप मेरा डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट देखो और आई वुड लाइक टू हायर यू एज अ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, तो वी विल शेयर द प्रॉफिट.
बट मैंने सोचा कि वो ब्रिटेन का बंदा है, फ्रांस का है, मैं वहाँ का रूल रेगुलेशन कोई नियम कानून नहीं जानती, कितने का खरीदेगा कितने का बेचेगा क्या, और वो मेरे साथ एग्रीमेंट भी साइन करने को तैयार था। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि वेदर यू आर गोइंग टू हायर मी और नॉट, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू बिजनेस इन पार्टनरशिप विद यू। मैंने उनको बोल दिया कि उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम मेरे पास ऑलरेडी है और मैं अपना बिजनेस इंडिया में ही करूंगी, मैं आपके साथ पार्टनरशिप नहीं करूंगी। मुझे एक बात हालांकि पूछनी है वो सीमा जी से, आपको ऐसे जो क्लाइंट्स है वो कहाँ से मिलते हैं? मैं काम करती हूँ उस पे, कंटेंट भी क्रिएट करती हूँ, और लिंक्डइन बहुत सारे सोर्सेज है, मतलब ये फिर एक बड़ी लंबी लेक्चर हो जाएगी कि जब डिसाइड कर लिया कि फॉर्मल Yeah, क्लाइंट ढूंढना है। let us हाँ, not so get into discussion. Seema ji, actually एक बात बताता हूँ. Definitely we all have our own stories to share about clients and all. Let us not get into it because जो भी है credibility, everyone has their own credibility there. So here let us, Aishwarya is like she is just starting her career. So she is ready to do work. वो ज़्यादा मेहनत करना चाहती है. That's the reason she doesn't know that she can tell no. एंड कई बार दोस्ती यारी में क्या होता है ना, हम लोग ना नहीं बोल पाते हैं, बट दैट इज समथिंग वी लर्न विद आवर एज एंड एक्सपीरियंस। नहीं, मैं क्योंकि वही कई बार बता वो रही आता थी, नहीं है। एक एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही थी, फनी था, मतलब जो फ्रेंड वाला बता रही थी अभी कि ही केम अप विद सम वर्क और एंड ऑल, फिर पहले मेरा मन नहीं था, फिर मैंने कर दिया, फिर वही है, उसको जल्दी थी कि भाई मेरे को प्रायोरिटी पे करके दे दो। तो कुछ डिस्कशन हुई, ये हुआ वो, तो मेरे को बड़े फनी वे में एंड करना था, तो वो शार्क टैंक का जो फेमस मीम है ना कि दिस इज नॉट माय एक्सपर्टीज एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, मैंने सीधा वो शेयर किया। कन्वर्सेशन खत्म। मैंने कहा भाई नहीं होगा, खत्म मत। तो आई वाज जस्ट सेइंग कि कई बार ना ऐसे हम सिचुएशंस में फंस जाते हैं, जैसे कोई क्लोज फ्रेंड हो या मे बी ओल्ड क्लाइंट, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मी गोवर्धन जी इज अ मेंटोर, ठीक है, आई वर्क विद हिम, आई आस्क हिम अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें ना नहीं बोल सकती, बट क्या होता है कभी एक रिगार्ड भी होता है कि यार ठीक है, काफी टाइम से वी आर वर्किंग टुगेदर, अब मान लो ही जेन्युइनली नीड्स माय हेल्प, ठीक है, कि भाई कुछ अर्जेंट आ गया, ही जेन्युइनली लाइक कि यार आज आप इसको ट्राई करो करने का, तो एवरी टाइम आई कांट बी लाइक कि हाँ भाई मत करो। मतलब हमें कुछ चीजें बैलेंस भी करनी पड़ती है देख के कि वो बंदा है कौन आखिरकार। अब कोई नया क्लाइंट है, नहीं उससे कुछ वो है, तो ठीक है मना कर दो। इफ यू नो कि तुम 7-8 साल से किसी को जानते हो, तो या तो दो तरीके हैं, जैसे सीमा जी ने कहा कि आप वैसे कह सकते हो कि भाई कुछ और प्रायोरिटी है, बट फिर अगले पर्सन को भी समझ में आ ही जाता है कि इफ इट्स जेन्युइन और एन एक्सक्यूज, तो वी नीड टू बी वेरी smart with that, I think. Yeah, you can be smart, Shwarya. You can also tell things fairly because सबके कैन बी पास 24 स्मार्ट घंटा, बट ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बेटर है, मना 24 घंटा होता है सबके पास ना, 24 आवर्स ही होते हैं। सो दो योर फ्रेंड इज देयर, यू टेल अभी कोई क्लाइंट से मैं काम ले लिया हूँ, उनका डिलीवर करना आई पड़ेगा। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हर किसी को खुश रखने के चक्कर में अपने सर पे अनवांटेड जो है बर्डन इम्पोज नहीं करने का। दैट इज अ वेरी गुड अगर सेइंग। दैट्स अ नहीं वेरी नहीं, that's true. That's very much true. I think yeah, we can end this session because we are already 1.5 hour from now. But I think मैंने बहुत सारा चीज सीखा, एंजॉय किया सेशन को. Though we are very less people in the room. Kirti has to leave. She told, gave a message. उनको सुबह 3 बजे कुछ जर्नी है. So she left in between. She was also she mentioned in the chat also that she was enjoying the session a lot, but I have to go. She sent me direct message instead of total message to everyone. So she left there. But I think this session will remain valuable even in the as a recording also. इसलिए मैंने YouTube में डायरेक्टली स्ट्रीम कर दिया ताकि इजीली. और अच्छा किया, क्योंकि काफी सारे मतलब एक्सपीरियंस शेयर किए, मानसी जी ने भी, सीमा जी ने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस किए, उन्होंने कैसे क्लाइंट से रिलेटेड भी और कैसे हम एजेंसी को हैंडल कर सकते हो, पर्सनल लाइफ को भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं। It's a great, on a great note, we are ending this Women's Day. So, Mansi ji, anything, final note, we can just end it. Yeah, I wanted to thank all of you because I very rarely get an opportunity to do this, and I think it's amazing that I would love to meet more people from the group if they're willing. Govardhan, if you can try to do something like this again. I think this is the only interaction I have which is non-clientish. So I really enjoyed, and I also wanted to say that maybe next time we can do a session where we can discuss Ruchira's question which she asked Seema ji, where she said that आपको ये leads कहाँ से मिलती हैं? हाँ, जो एकदम आपको पार्टनरशिप के लिए भी ऑफर कर देते हैं। हाँ, so
I think all of us, thoda bahut we get from everywhere. So maybe she can share something. I have a few. She herself, I'm sure Ruchira, you yourself will have a few ways of doing that. And whoever else is willing to share the way that they get leads and the methods that are effective for them, I think that's a good idea to have as a session next time if you would like to have. Yeah, definitely. That's a close-knit session we can have. We were trying to do such kind of stuff for club as well, about presenting yourself. Last time we did something like portfolio kind of a thing. So one guy, agency guy came in, he shared his secrets. He just exactly took his slideshow. He showed how does he present, how does he pitch to the clients. And that recording is still available in the club and I can actually show you guys also. So that's a good idea. We can work on such kind of topics where we how we can actually develop our business better, how we can do things better together. And today, unfortunately, what happened is this time I will frankly tell you, I did not promote this a lot because I was like I traveled that time. I'm in Vizag right now, so I was just setting up my room right now. Also, there is some echo. I have set up this room here and there right now. I need to add some more things that it's not the voice quality is not very bad. So right now there is a kind of echo. Still, it is there. I try to reduce it. So this today's session, I was not able to focus totally on promoting because there are very good marketers, women marketers. There are 18 of them. So that's the reason one of the lady was not responding to my question and just she started promoting something. I felt very bad because I know her. She is a senior person, but see, you need to be sensible a bit. It's not like you promote everything. एक WhatsApp group देखा यार मैंने एक message छोड़ देता. Right. How insensitive of it. So I know her very well. She is good. She is credible also. But I don't think जितना भी credible हो जाओ भाई आप, if you don't respect that human thing, मेरे को I don't feel the connect. Ultimately, everyone has their own credibility. Everyone has their own capacity. So not like Mansi ji भी अपने time निकाल के आए. So everyone is having their own thing. But you all valued this and you came. और else जो लोग आए भी नहीं है तो नो प्रॉब्लम बट यू जस्ट ट्राइंग टू जस्ट पोस्ट कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप देखा शेयर मार आई मीन पूरा अरे right गोवर्धन जी, right अभी place. अभी आपने बोला था कि मार्केट में सभी टाइप के लोग होते हैं, तो मार्केटर्स में भी सभी टाइप के लोग होते हैं. One of the yeah, definitely as a community guy I face a lot. I have this and the community running is a thankless job, but still I believe why I do this is because we get to meet some handful of awesome people. Yes. That's enough. Not everyone is like that, and I don't also generally don't talk mostly about the pessimistic stuff. That happens all the time because everyone has their own purpose, own concept. Sometimes I think I have met some of the best people in groups like this. Like you have met through the niche marketers group. I've met a couple of other people. My hires, who was asking, Ruchira was asking, right? The person I hired was from a women's group. Mothers group. I don't know why I'm in the mothers group. I don't have children. मैं भी added हूँ mothers group. बहुत सारे Facebook पे. Added तो मैं भी हूँ. So anyway, but what I'm saying is from these kind of groups and you're right about there are very few people who have empathy because we have, I think, become insensitive as in general as a public because so much information is getting thrown at us all the time. But I think as marketers also we need to become a little more empathetic to another human being, a little more sensitive to another human being as well. Yeah, that's how connections are built, that's how it's built. Because people think that today when you're small, you don't respect someone. Someone is small, you don't respect them. There's always tables turn around and also it's all not about giving and taking, but you need to learn that life will not be the same all the time. And though it's like life can be same also, but just make it you feel you Aishwarya will never forget how Mansi made her feel. Yeah. So definitely Aishwarya will say that I enjoyed the session. I talked to her. It was really pleasant to talk to her. So we never forget anyone. ऐश्वर्या को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है सारे सेशन से. ये मैंने देखा जब जैसे ऐश्वर्या ने मेरे साथ में भी इंटरव्यू किया था तब भी काफी सारे इंसाइट्स मिले थे क्योंकि उसके लिए सारे इंडस्ट्री और हर चीज नई है इसीलिए इवन आपको सब मिलता है. जैसे आज मुझे भी मानसी जी से, सीमा जी से, इवन गोवर्धन जी से काफी कुछ नई चीजें सीखने को मिली है जो काफी इंसाइटफुल थी और मैं चाहती हूँ ऐसे और सेशन करो आप.
That is lot what I of things, told. even Aishwarya के साथ भी जो वो influencer marketing कर दिया है at a very young age. So I talk to her sometimes, and sometimes I pick some things from her. So I think everyone we can learn सब किसी से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. That is how life actually, if you're open to learning, भी कुछ ना कुछ हमारा बच्चे भी हमको सिखाते रहता है. My 6-year-old daughter teaches me a lot of stuff. Sometimes she talks about very interesting things. Suddenly that insight, that perspective we can never think of that. So it's just that's always there. So it's really a pleasure having you guys on the Women's Day. Next time I'll plan to have a bigger session, maybe with women marketers, or maybe combinedly we'll try to do, because I could get 18 or 20 people who are like whom I have been associated with the women marketers, though most of them know me well. So if I plan it properly, I think we can make most of them to come to the session. That can be more fruitful. Even a lot of networking can happen, because I see there can be a lot of synergies coming up. And advantage is with this 1 hour session, people can actually judge and try to understand. Yeah, can I even work with Ruchira, or can I even work with Aishwarya? We start understanding. Okay, let me talk to her at least. So that's the advantage of having this kind of a discussions, long discussion. Right. Thank you very much for coming and staying. Instagram story बनानी है, सब लोग कुछ बोलेंगे क्या please? मैं तो फोटो ले रही हूँ. बस इतना बोलना, मैं इतना बोलना चाहूंगी कि एक साथ जो बोल सकते हैं. क्या क्या रुचिरा, व्हाट इज दैट? एक साथ जो बोल सकते हैं. एक साथ हंसो यार सब पहले. मेरे को फोटो लेने दो. हैप्पी वुमेन्स डे ना, दैट्स द थिंग. बोले, मैं एक चीज बोलना चाह रही थी कि अगर इस तरीके का सेशन वीक में एक बार भी अगर हम लोग करते हैं वुमेन्स मार्केटर मिल करके भी, तो देयर आर लोट्स ऑफ मार्केटर्स फ्रॉम लोट्स ऑफ सेगमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. somebody is from content writer, सीमा जी हम लोग बहुत frequently करेंगे. We'll do it more frequently, but week में एक बार नहीं होगा, क्योंकि वो सब मेरे को गाली देता है, क्योंकि ये गोवर्धन हमेशा ना he will say, he always comes, उनको कुछ काम धाम नहीं है वो. सर अभी भी एक चीज रह गई, स्पिन द व्हील प्लान किया था, वो तो किया ही नहीं हमने. जैसे कि रुचिरा भी बता रही थी कि ज्यादा लोग आएंगे सोच के we thought of that spin the wheel thing, where we talk or do something funny, but हम लोग का already conversation got extended and all. As marketers, being marketers, work discussion नहीं छूटेगी कभी. Yeah, definitely. जैसे कि रुचिरा भी पूछ रही थी कि सब एक साथ बोलेंगे. पहले उनका रीड हो जाने दीजिए. जोर से बोलना चाहिए. So happy Women's Day कहते हैं हम लोग सब मिलके. हाँ. कौन करेगा? 1, 2, 3, go. 3. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Happy Women's Day. रील चला गया? Okay. So I have to learn this. I have to learn this from you, Ruchira. मानसी मैम, आपसे एक चीज मुझे पूछनी थी. I even don't know what is your expertise. What is the expertise you are in? Because you came late. She's into persuasive marketing. I'm doing persuasive marketing. I'm certified for that, and I also run a B2B branding and marketing agency. So content for LinkedIn, that kind of thing, as well as branding. So branding would be like everything from positioning, logos, the entire brand guideline, their sales material, all of that. So my expertise is actually sales. Like I became good at sales only because I wanted to do it for my clients. Because she doesn't work on weekends. So yeah, I have to follow you on LinkedIn also. Yeah, you should only after a month because my content abhi tak ready nahi hai. I stopped doing marketing on LinkedIn only because I was getting inundated with too many requests and I was not able to handle it. So I had to stop. If you shared good content and informative content relevant to your industries, then one can get a good client from social channel, social network. नहीं वो हमारे पास आज तक सीमा जी वो ऑलरेडी आप एक वीडियो बना देना इस पे. किस चीज पे? लिंक्डइन पे? नहीं, जो सीमा मैम पूछ रही है. अच्छा.
अभी तक हमने जितने भी क्लाइंट्स गेन किए हैं, आइदर इट्स फ्रॉम इंडिया और इट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, वो सोशल मीडिया से ही मेरे पास सारे क्लाइंट्स आए हैं। इवन पेड कैंपेन इतना काम नहीं करता जितना ज्यादा काम करता है कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करने से काम करती है। Yeah, बहुत ज्यादा। definitely Seema ji, I think we'll have it as a discussion for another day, क्योंकि बहुत Yeah. लंबा डिस्कशन है कि लीड जनरेशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इज अ वेरी बिग थिंग, सो वी डिस्कस इट। हाँ, सम टाइम फिर कभी इस बारे पे इस तरीके से फिर कभी कुछ सेशन अगर ऑर्गेनाइज हुआ तो वी विल शेयर। डेफिनेटली हम करते रहते हैं, आप लोग कभी कभी आते नहीं है, हमेशा आते नहीं। मैं प्रॉपर मानसी मैम को ही फॉलो करती हूँ और आपको ही फॉलो करती हूँ। मैं ये मान के चलती हूँ, आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्न। डेफिनेटली आपको फेसबुक ग्रुप में और व्हाट्सएप पे सभी जगह मानसी मैम को भी मैंने फॉलो किया हुआ है और आपको भी आपके कंटेंट तो मैं एवरीडे देखती हूँ। मैम आज आपकी बहुत सारे फैन बन गए हैं यहाँ पर। I know. I should do this more often. She is the wow marketer. नहीं, I am one of a very older fan of her. मैं आज कोई नहीं आज ही फैन बनी हूँ। I am the youngest मानसी fan. रस्तोगी को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। I was not expecting this. Thank you so much, ladies. I'm a little shy. I talk a lot, but I'm very shy. Okay. Okay, that's a great compliment on the Women's Day. So we'll end it in that note. Thank you everyone for joining. क्योंकि it's good, like Thank you so much. we started like a chit chat and we are a bit formal in the starting, and now we are just like कुछ भी बक रहे, मतलब we start अभी लाइफ में चल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपन कुछ भी बात कर रहे हैं हम लोग। So that's a good way to end it. I think being informal is something ना। No, next time we will share informative content. I'm very pretty sure कि next time जब कभी भी ऐसे get together हुआ तो we will share informative content as well, और अपने अपने फील्ड का जो एक्सपर्टाइज और जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग शेयर करेंगे। और कोई अगर क्वेश्चन आंसर Q&A भी करता है तो उसमें भी आई थिंक मैं उम्मीद करती हूँ मानसी मैम भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एक्सपर्टाइज शेयर करेंगे। इनको बोला जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट, तो हम लोग को डेफिनेटली वी विल गेट बेनिफिटेड। या श्योर डेफिनेटली ऐसा कुछ करेंगे, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई वो बहुत अच्छी बात है, मतलब थोड़ा टाइम भी स्पेंड होता है और साथ में कुछ सीखने को भी मिलता है। डेफिनेटली। थैंक यू सीमा जी। सो थैंक यू एवरीवन। So bye everyone, and YouTube recording रहेगा, I'll share it with you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you so much. Happy Nice meeting all of Happy you. Women's Day. Happy Women's Day. Nice to meet you all of you. Yeah, ये सब Same connect हो here. जाना। Same here.